morning students. How are you all? Hope you all are doing well at home. As you all know that we have started special online classes for you all. So here it is. Today we are with English online class and the topic for the day is letter writing. Before going on letter writing, let's see what letter is. You all know what letter is. चिट्ठी, पत्र, खत, ये सब letter word के synonyms हैं. You all must have seen letters. आपने अपने आसपास भी देखा होगा एक पेपर पर लिखकर उसको फोल्ड करके एक एनवलप में डालकर उसे पोस्ट ऑफिस पर जाकर वहाँ पर स्टैम्प्स लगाकर उसे पोस्ट करना. दैट इज लेटर. वन ऑफ द एंशिएंट ओल्डेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड. लेटर क्या है? इट इज़ अ रिटन मैसेज. एक रिटन मैसेज है. डजेंट मैटर वेदर इट इज हैंड रिटन और इट इज प्रिंट आउट. एक रिटन मैसेज which is between two parties. The sender writes its message on the paper and then delivers it and then receivers receives it. तो sender के द्वारा भेजा गया message which is received by the receiver is a letter. A way of communication between two parties, that is sender and receiver. It is a post. You all know we post the letter. After writing the message, we post the letter and then it goes to the receiver and the receiver receives the letter. That is the process. Okay. So this is letter, one of the oldest means of transport or means of communication between two parties, sender and receiver. It is a written message and we post it. Okay. After letter, let's see what are the two types of letters. You all know generally there are two types of letters. One is formal and another is informal. What is formal? सूट बूट वाला ऑफिशियल लेटर, ऑफिस वाला लेटर जिसमें बहुत दिखावा होता है. ठीक है. What is formal letter? It is formal. बहुत दिखावा, बहुत बनावटीपन है इसके अंदर. Along with it, इसका एक fixed certain pattern है. You have to write a formal letter within that pattern only. After that, it's having lots of formality. बहुत ही extra respect show करनी पड़ती है formal letter लिखते हुए. We have to choose the vocabulary, each and every word of this letter very carefully. Okay? Then it is very professional letter. As I said, professional है इसीलिए इसमें formality बहुत ज़्यादा है. इसीलिए we show lots of respect in it. It is pretendiness. Okay? इसकी body भी you don't just have to write the message in it. Body में भी first of all you have to introduce yourself in it. Then the main problem, main message. Then after that you have to conclude it with very polite words. ठीक है? So it is a professional letter. और जनरली फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? बिजनेस लेटर्स, अथॉरिटी लेटर्स, अथॉरिटीज से रिलेटेड जो भी हम लेटर्स लिखते हैं दैट लेटर, कंप्लेन लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स. सभी ऑफिशियल लेटर्स फॉर्मल लेटर में आते हैं और वी डोंट यूज फॉर्मल लेटर्स फॉर आवर पर्सनल इंटरेक्शन. ओके. द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, एज आई ऑलरेडी सेड, इसका एक सर्टेन पैटर्न है. हमें उसी के थ्रू इसको लिखना है. सो द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर इज स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द सेंडर्स एड्रेस. जो लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा. देन द डेट. देन रिसीवर्स एड्रेस, जिसको हमने भेजा है, जिस अथॉरिटी को, ऑफिसर को, ऑफिशियल को हमने भेजा है उसका एड्रेस और द डेजिग्नेशन ऑफ दैट पर्सन. देन आफ्टर दैट द सब्जेक्ट. Then salutation, respected sir, respected ma'am, like this. After that comes the body, and body is not the simple body. Body is also having three parts. First of all, we have to introduce it very politely, respectfully, like with due respect. This is to inform you. After that, the main content, the main message or information in it. उसके बाद complimentary. Thank you very much. I expect support from you. I'll be obliged, like this. Then subscription. Subscription में yours obediently, sincerely, yours truly, yours faithfully, like this, showing extra respect. Such kind of words. After that, your sign and your designation, whatever it is. Okay. So this is about formal letter. As I already said, सूट बूट वाला, दिखावे वाला, extra respect वाला formal official letter. Then let's. So this is the format of formal letter. You can take a screenshot of it. इसका एक screenshot ले लो and you can write down the steps. Okay, which will be helpful for you later on. Now let's move on to informal letter.
जो कि फॉर्मल का बिल्कुल अपोजिट है. देयर इज नो फॉर्मेलिटी, देयर इज नो प्रिटेंडनेस, देयर इज नो ऑफिशियल वर्बैलिटी और वोकैबुलरीज यूज्ड इन इट. ओके, इनफॉर्मल लेटर में क्या है? दिस इज पर्सनल लेटर. We don't have to show extra respect in it. We just share our emotions and our feelings directly. No formality, no dikhawa. After that, there is no pattern. Like there was a fixed pattern in formal letter, there is no pattern in informal. Fixed body का pattern नहीं है. Okay? Then no formality, as I already said. And इसमें आप personal information, personal feelings, personal experiences share करते हो. Officially कुछ share नहीं करते. क्योंकि दिस इज नॉट एन ऑफिशियल और बिजनेस लेटर. ओके, ये हम किस लिए यूज करते हैं? वी यूज इनफॉर्मल लेटर टू शेयर आवर फीलिंग्स एक्सेट्रा विद आवर फ्रेंड्स, विद आवर क्लोज रिलेटिव्स एक्सेट्रा. फाइन, नॉट फॉर ऑफिस पर्पस. फाइन. नाउ लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर. इसमें दिस इज लिटिल सिंपल देन फॉर्मल लेटर. सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, whosoever is writing it, we will write the sender's address first. After that comes the receiver's address, जिसको आप लेटर भेज रहे हो उसका एड्रेस. After that date, then dear friend, dear father, dear mother or dear name, ABC, whatever it is. After that, straight away you have to start the letter, start the body of the letter, whatever you want to share with your relative or the loved ones. सीधा start करना है, no formality, no extra respect, nothing. Then subscription. At last you will write your lovingly, your elder brother, like this if you want to write. Otherwise you can simply write your name also, because it's not formal, it's away from formality. But these steps are important. Sender's address, receiver's address, date. After that, body is according to you. Just share your feelings straight away. So this is the concept of the letter writing, which is one of the most important topic of your syllabus. These are the two formats which you can take the screenshot for your later help. इसके बाद आपकी syllabus में, आपकी book में there is chapter 1, a letter to God, which is related to this concept, because we are learning letter and that is also a letter to God. So we have already done that chapter. Let's summarize it, recapitulate it. But before that, I want to know from you, what do you think this letter, a letter to God, what do you think? Is it a formal or informal letter? अगर हम God को letter लिखते हैं तो will it be a formal letter or an informal letter? Okay, I want the answer of this question in your messages, or you can message me directly also. Fine, let's go to the chapter. A letter to God, a small story based on a farmer का extreme faith in God. This is the main concept of the story. उसका blind faith, extreme faith in God. Who is the farmer? Lencho. Lencho is a poor farmer. What kind of person he is? He is very simple. He is not at all ambitious. He is satisfied within what he is having. He is hardworking. He is optimist. Optimist मतलब पॉजिटिव सोचना, हार ना मानना, निराश ना होना. Optimist मतलब कभी गिव अप ना करना. तो he is very optimist. He believes in goodness, कि अच्छा होगा, ठीक है, never give up. He is very hard working also. Along with it, he is very honest. So Lencho is a poor farmer who is simple, honest, optimist, hard working, satisfied. Satisfied मतलब he is not greedy and he is not ambitious. उसके पास जो है वो उसी में satisfied है, खुश है, ठीक है. उसको इतना मिलता है कि वो अपना और अपनी फैमिली का खर्चा अच्छे से चला सके विदाउट स्लीपिंग, विदाउट फूड. तो इतना ही उसके लिए काफ़ी है. ही डोंट वांट मच. तो दैट्स व्हाई ही इज नॉट एट ऑल ग्रीडी. ही इज अ satisfied person. अब एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. एवरी ईयर ही वॉज डूइंग फार्मिंग और उससे उसका जो क्रॉप फील्ड थी वहाँ से ही वॉज गेटिंग दैट मच कि पूरा साल वो और उसकी फैमिली आराम से खा सकता था. बट वन ईयर समथिंग वेंट रॉन्ग. What was that? Actually, after farming, it was about to harvest. उससे पहले Lencho was expecting कि थोड़ी बारिश हो जाए तो मेरी जो crop है that will become much better than it is.
तो बारिश होती है and Lencho felt good, but after some time that rain converted into hailstones. Hailstones, ओले, freeze drops of water. ठीक है, hailstones की वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है. Not even a single crop was left. Not even a single corn was left in his field. जिसकी वजह से now Lencho and his family is tensed. Because they are having no money with them, no saving with them, and he is a poor farmer. That's why now he is tensed that what will happen now, what they will eat whole year, how they will feed their stomach, what they will do, and how they will crop again, how they will farm again. अब इसी टेंशन में वो सोचता है कि एवरीथिंग इज डन बाय गॉड. भगवान, उसका मानना है कि गॉड हैव हिज आई ऑन एवरीवन, और वो सबको देख रहा है. तो उसे लगता है कि ही इज ऑल्सो वॉचिंग माई कंडीशन, सो आई मस्ट टेक हेल्प फ्रॉम द गॉड डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ फीलिंग सैड. ये सोचने के बाद कि मैं भगवान से हेल्प मांगता हूँ एंड ही विल हेल्प मी बिकॉज ही इज वॉचिंग एवरीवन, ही इज हेल्पिंग एवरीवन. दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड. When he write a letter to God, he posted that letter, and when the letter goes to the post office, वहाँ पर पोस्ट मास्टर जो है वो उसके लेटर को पढ़ता है और वो सबको पढ़ाता है. First of all, they made fun of Lencho, but then post master becomes impressed from his faith in God. और उस फेथ की रिस्पेक्ट करने के लिए ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू हिम एज अ रिप्लाई ऑफ हिज लेटर ऑन बिहाफ ऑफ गॉड. और वो अपने ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज से पैसे इकट्ठे करता है. बट अनफॉर्चुनेटली लेंचो आस्क्ड फॉर 100 pesos एज अ हेल्प फ्रॉम गॉड, बट ही गॉट ओनली 70 pesos. इतना ही कलेक्ट कर पाता है पोस्ट मास्टर. तो पोस्ट मास्टर जो है 70 pesos कलेक्ट करके लेंचो को सेंड कर देता है एज अ रिप्लाई ऑफ हिज लेटर. लेंचो रिसीव्ड दैट लेटर, ही काउंटेड द मनी एंड इंस्टेड ऑफ फीलिंग हैप्पी, उसको गुस्सा आता है. ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड. व्हाई? बिकॉज इट वाज नॉट 100 pesos ही आस्क्ड फॉर. तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग गॉड ही ब्लेम्ड पोस्टमैन. उसे लगता है कि ही इज चीटिंग and postman took 30 pesos from his envelope. और वो दोबारा से एक लेटर लिखता है. He wrote another letter to God, and this time he requested God to not to send money through postmaster because postmaster is a bunch of crook, and postmaster and the staff is also a bunch of crook. They took 30 pesos from the money you sent to me. तो आपने मुझे 100 pesos पूरे भेजे थे, जिसमें से 30 pesos पोस्ट मास्टर ने निकाल लिए, एंड नाउ आई एम हैविंग ओनली 70 pesos with me. So this time send money directly to me and not through the postmaster. So that is the end of the story, students. I hope you understood everything and the concept of letter writing, and this chapter is clear to you. So now your homework is, I want answer of 2 questions from you. First, ये जो लेटर उसने लिखा लेटर टू गॉड, इज इट फॉर्मल और इनफॉर्मल? सेकंड, इमेजिन योरसेल्फ एज लेंचो एंड राइट अ लेटर टू गॉड फॉर गेटिंग हेल्प फ्रॉम हिम. थैंक यू.